Welcome students, myself Sanjay Kumar Gupta, Science and Mathematics teacher in St. Michael's Academy, India. Students, in this video, I will teach you about Science of Class 8, Chapter 2, Microorganisms. Students, in previous videos, I have told 4 chapters, 1 from biology, 1 chemistry and 2 from physics. Now once again we start from biology section. In this chapter we will focus on the given points: introduction of microorganisms, general characteristic of microorganisms, discovery of microorganisms, habitat of microorganisms, types of microorganisms, advantages and disadvantages from microorganisms, as well as nitrogen fixation and nitrogen cycle. First of all, we should know what are microorganisms. Very simple to know about it. Microorganism is made up by 2 words: micro plus organisms. Micro means tiny and organism is body, means alive body. So it's clear that microorganisms are those organisms which are so much tiny. Sukshma Jiva. They are so tiny that they cannot be seen by our naked eyes. ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम इनको अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, और इनको देखने के लिए हमें बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. So, microorganisms are supposed to be in the size of thousands part of 1 millimeter. Now, these microbes are found in every area of our environment, whether in air, in water, in soil, inside our body, outside our body. Means wherever we go, we find about to these microbes. As just in current time, you find we are facing a dangerous microbes, कोरोना. जैसे हम लोग आज झेल रहे हैं इस माइक्रोब्स को, इसको हम देख नहीं सकते हैं, इसको हम महसूस भी नहीं कर सकते हैं, बट यह हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारी कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर रहा है, और कई लोग जो इसकी शिकंजे में आते हैं वह मौत के मुंह में चले जा रहे हैं. सो कोरोना या कोविड-19 responsible for influenza as well as a fatal disease in which a person who is caught by it is to be sent to death. So these microbes are very harmful to us, as well as some of the microbes are very useful to us. As you see, we convert milk into curd. Some microbes help us in digestion of food, who prepare the complex in our body and
help us in the absorption of food. So students, let's go to read in detail from book. As the some of the characteristic given here, इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं जो इनको कुछ अलग बनाती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. As microorganisms are either one-celled organisms or a collection of undifferentiated cells. मीन्स ऐसे जीवधारी या तो एक कोशिकाओं वाले हो सकते हैं. यू नो अबाउट सेल्स. सेल्स आर वेरी टाइनी दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज. सो इट्स क्लियर दैट ये कितने छोटे हो सकते हैं कि ये या तो सिर्फ एक कोशिकाओं वाले हो सकते हैं या फिर ये कुछ कोशिकाओं के समूह हो सकते हैं, लेकिन ऐसे समूह होते हैं जिनको हम अलग नहीं कर सकते. अगेन दे आर विजिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. मतलब इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. दे ऑकर इन एयर, वाटर, सॉइल, इन एंड ऑन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये किसी जीवधारी के शरीर के बाहर या भीतर हो सकते हैं, मरे हुए शरीर के अंदर हो सकते हैं, हवा में, पानी में, मिट्टी में हो सकते हैं. एंड दे कैन एग्जिस्ट इन एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ड्रॉप. यानी ये बहुत कठोर प्राकृतिक अवस्था, चाहे वो कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, उन जगहों पर भी इनका निवास हो सकता है. उसमें भी ये पैदा हो सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं. यहां तक कि अगर उबलता हुआ हॉट वाटर है या मार्शी लैंड, यानी ऐसे प्लेस जो दलदलियां हैं या मरुस्थलीय हैं, वहां भी इनका सर्वाइवल हो सकता है. ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द माइक्रोऑर्गेनिज्म enclose themselves in hard resistant covering. This is called cyst. मीन्स जब ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस में होते हैं तो अपने आप को एक चादर से ढकते हैं. जस्ट दे कवर देमसेल्व्स इन अ शीट. दिस इज कॉल्ड cyst and this cyst save them from unfavorable condition, and when they get their favorable condition they start surviving in the body, and again they come in the position of their multiplying numbers. Again, microorganisms may be autotrophs, heterotrophs, saprophytic और parasitic. यानी ये स्वपोषी भी हो सकते हैं, ये खुद से अपना भोजन तैयार भी कर सकते हैं. कुछ ऐसे होंगे जो हेटेरोट्रॉफ्स में अपना भोजन खुद तैयार नहीं करेंगे, ये दूसरे पौधे या जंतुओं से भोजन को ले लेंगे. सैप्रोफाइटिक मरे हुए जंतुओं से भोजन ले सकते हैं, सड़े गले चीजों से भोजन ले सकते हैं. एंड पैरासाइटिक दे डू नॉट डू एनी लेबर टू गेट देयर फूड मटेरियल्स, बट दे यूज द food from their host body. And some microorganisms are helpful to us in agriculture and industry, while some are harmful, while some causes disease. यानी कुछ ऐसे होंगे जो खेती में हमारी मदद कर सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, जैसे कोरोना को लीजिए. दिस इज हार्मफुल फॉर अस. नाउ चिल्ड्रन, वी लर्न अबाउट discovery of microorganisms. Microorganisms are first of all discovered by the scientist Leeuwenhoek. Leeuwenhoek was the first biologist, a Dutchman who discovered these microorganisms
on the surface of bark, जिसने लकड़ी के एक बार्क में बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप की सहायता से इस माइक्रोऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया का पहले बार उसने खोज किया। नाउ एंटन वॉन लीeuwenhoek, a Dutch man, discovered very small living creature in rainwater using his newly constructed microscope. He also discovered bacteria. Next comes Louis Pasteur, who is called the father of bacteriology. यानी जो बैक्टीरिया के बैक्टीरिया विज्ञान का पिता माना जाता है, उनको जनक माना जाता है। इसने he discovered microorganisms in the air and included that they are responsible for fermentation of food and diseases in man and animal, and he gave the famous germ theory of disease. इन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसमें इन्होंने बताया कि कैसे ये जीवाणु, ये सूक्ष्म जीवाणु हमारे शरीर के लाभदायक होते हैं, ये रोग के कारण भी बन सकते हैं। एंड इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, यानी कि बहुत सारे रोग जो हमें होते हैं इसका कारण बैक्टीरिया है, इसका पता उन्होंने ही लगाया था। अगेन कम्स Robert Koch, designed several techniques of handling bacteria, and development of electron microscope has helped him in the detailed study of microorganisms and their relation with human beings. Students, often you have seen or listened about different diagnosis of the disease. What be here? क्या होता है? When you go to doctor, he takes samples of your blood and send to laboratory. The person who diagnoses it just check your blood, urine, sputum in under the microscope, and he tells that by what disease we are just facing, we are caught. So microorganisms can live anywhere, everywhere, as in water, soil of various types including soil of desert, marshy lands, water including hot spring water, salty sea water, and ice-cold water on the poles. Dead and decaying organic matter inside as well as on the surface of the body of animals including humans. Some microorganisms grow on other microorganisms while others exist freely. Microorganisms like amoeba can live alone while fungi and bacteria may live in colonies. यानी अमीबा एग्जाम्पल वो अकेले निवास करते हैं, अकेले अपना सर्वाइवल करते हैं, जबकि फंगाई और बैक्टीरिया की बात करें तो ये कॉलोनी यानी झुंड में रहना पसंद करते हैं एंड दे सर्वाइव देयर। नाउ हियर आर सम facts related to microorganisms, as microorganisms occur in the intestine of human being as well as in other animals. They are called commensal bacteria. Commensal means सबभोजी, यानी ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे भोजन के साथ ही अपना भी भोजन करते हैं, अपना भी सर्वाइवल करते हैं, एंड दे आर हेल्पफुल फॉर अस. एज आई टोल्ड अर्लियर, दे प्रोड्यूस बी कॉम्प्लेक्स विच इज हेल्पफुल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आवर फूड मटेरियल्स. Some bacteria, as
caicum, living bacteria who found in cattle, in ruminants, help them in digestion of cellulose. Termites can pour through wood only because of cellulose digesting bacteria that are present in their alimentary canal. Again, there are about 100 million bacteria in the every gram of soil. यानी लगभग 1000 लाख बैक्टीरिया ये 1 ग्राम मिट्टी में हो सकते हैं, जबकि 500 मिलियन बैक्टीरिया आर फाउंड इन द डेड सेल ऑफ आवर स्काल्प। यानी हमारे ये जो बाल देख रहे हो ना, तो ये खोपड़ी के इस हिस्से में जहां पर मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसमें लगभग 5000 लाख बैक्टीरिया हो सकते हैं। नाउ चिल्ड्रन, एंजॉय द वीडियो, वॉच इट केयरफुली एंड लर्न something from it, as well as do the checkpoint 1. We observe a variety of plants and animals around us. However, some living organisms are not visible to the unaided eyes. These tiny organisms are called microorganisms or microbes. Note that not all tiny organisms are termed as microbes. Microorganisms are found in air, water, soil, and also inside the bodies of plants and animals. Let us perform an activity to understand this. Take some moist soil in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. You will find many tiny organisms moving. You can also try this activity using a few drops of water from a pond. Some microorganisms, such as fungi, that grow on moist bread, can be seen with a magnifying glass, while others are microscopic. Hence, they are called microorganisms or microbes. Microorganisms are classified into 4 major groups, that is bacteria, fungi, protozoa, and some algae. Some examples of bacteria are spiral bacteria and rod-shaped bacteria. Those of fungi are bread mold, penicillium, and aspergillus. Amoeba and paramecium are examples of protozoa, while chlamydomonas and spirogera are examples of algae. Bacteria, some algae, and protozoa are single-celled, whereas fungi and some algae are multicellular. Viruses, though different from these organisms, are considered microbes. They reproduce only inside the cell of the host organism, such as bacterium, plant, or animal. Thank you. Now about detail of microorganisms we will see in the next